Right. So welcome to today's class. So in this class, we will discuss about the remaining part of the precision rectifier, and primarily we will discuss about the linear power supply. Okay. So let us go to the earlier part of the earlier class, and then come back to the power supply. So shall we go ahead? Any query regarding what we learnt last time? So we are considering the second case, case 2. So which is this case 2? Negative input with negative input. Right. So for negative input we have a reverse battery, negative 1 volt. Same circuit we have used. So we started with virtual ground, applied virtual ground, then obviously this will be 0. The battery voltage is assumed to be 1 volt, so this will be -1. This is again -1, same wire. So the current will be going from right to left of 1 milliampere because the resistance is 1k, and this current cannot come from here, it cannot come from here also, so it has to come from here, right, and that value will be 1 milliampere. Fine. So this voltage is 0 because of the virtual ground, and because of 1 milliampere current this will be 1 volt. And therefore, and this 1 volt will be like this, 1 volt. Same current is coming from here because this current cannot come from here, and therefore drop will be 1 volt here also, and the output voltage will be 2 volt. So it will be plus. Now you will work on this, and as far as diodes are concerned, if you look at the voltage, if you look at the voltage at this point we have 1 volt, so this will also be 1 volt. Okay, so whatever voltage we give, whatever this will also be same. So if this is 1 volt, this will also be 1 volt. Because of this what will happen is that the diode D2 will conduct in this direction, providing 1 milliampere here, and this voltage will be 1.7. because this is plus 1.7 and this is 0 volt, so this is higher, this is lower, so this cannot conduct, D1 cannot conduct, D2 can conduct. So which is shown here, illustrated here. You need to think a little bit and go on thinking in a direction that I illustrated just now. Okay. So let me ask you a question which will clear rather few of the doubts. Just read the question. If D1 is off, how OP1 has negative feedback? Let us look at this. We said that this is 0 volt, this is 1.7 volt. Why 1.7? Because this will be 1 volt, because we have to have a virtual short here. This is 1 volt, this is also 1 volt, and because this is 1 volt, sorry, 1 volt, this will be 1.7 because the diode is conducting.
fine, and therefore D1 cannot conduct. And if D1 is not conducting, how there is negative feedback? This is the question. So can anybody answer? Is there any other path for signal to come from output of the D1, output of OP1 to input of OP1? Is there through second op amp? Yes, Dashrath, perfectly right. So actually the output of this will pass through the diode because the diode is on. This non-inverting terminal will be producing some output. If there is some change, this change will reflect here, this will reflect here, this will reflect here, here, and in this path actually. So this variation, the output variation if any, will be reflected here through the path available, and therefore the output of op amp will get the feedback from here. Everybody understanding this? So even if D1 is not working, in the sense it's off, still OP1 has feedback, negative feedback, and therefore virtual short can exist. Here also virtual short can exist because there is a negative feedback. Everybody understanding this? Okay. So I think you need to actually draw this circuit once, and with no currents shown, with no state of diode shown, you have to draw this once without looking at, and then when you get any problem, you just give a feedback that we are unable to do it on our own or able to do on your own. And in case there are some doubts, we will have a small session on this. We will dedicate some part of next class or something like that for this particular circuit analysis and understanding maybe. Is this fine? So we understand that everything cannot be remembered at once, but by and large the logic should be understood. Yes or no? Okay, fine. So I think we'll take a pause as far as this discussion is concerned. So when you actually give a signal, any sine wave or any waveform to the precision rectifier, then the output will be the faithful reproduction of input. So the output will be like this. This is whatever we studied is a full wave rectifier. So the output voltage will be like this. Okay. However small the signal may be, even if the input signal is 100 millivolt, still the output will be proper. Okay. For different input voltages, you can think of the circuit and then come out with conclusion that the output is absolute value of the input given. Okay, I'll share you one more circuit whenever we have enough time about the precision rectifier, but I think for time being this is enough. The logic which we have to apply whenever we have a circuit similar to this, that should be understood. Okay, the way in which we think and come out with a conclusion is more important than this particular circuit to be understood. हमारा उद्देश्य ये नहीं कि ये particular circuit सीखना, ये तो सीखना ही है, but we want to understand how the things are to be analyzed. Okay, with little practice you will be able to do this. So I suggest that what you have to do at home whenever you are free, पहला कि draw the circuit
without referring to any reference, try to draw the various currents in the circuit, and those will give you voltages, will help you to calculate voltages at different points. So do it for positive and negative input cases. So whatever we did in the class, you will do on your own. This will help you understand this circuit, not only this circuit, but you will get confidence in analyzing any circuit. Possible? Okay, thank you. So please do this, spend some time. It's not time spending, but it's investing time in creating understanding, developing logic, thought process, which is more important than understanding this particular circuit. ये सर्किट तो एक बहाना है, एक सर्किट एक जरिया है टू डेवलप आवर थिंकिंग प्रोसेस. हमारा लार्जर एम वो है अपना थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना. राइट. So I think with this we will take up one more small point I would like to add, and then we'll. So let me ask you a question. Can, if precision rectifier is better than usual diode rectifier, can we use it for half wave, full wave and bridge rectifier? Okay, so please read the question. If precision rectifier is better, it is better in the sense that it can rectify even low level signals. That is the speciality of precision rectifier. So can we use it for half wave, full wave, bridge rectifier? What is your answer? Start thinking and come out with your opinions. It is your opinion based on your intuition. Inner tuition. So whatever your inner tuition says, just share it. We are not here to decide right or wrong. Later on we'll do that, but initially let us take some sharing. At least did you understand the question? We may not know answer, that's fine, but did you read the question and understand the question? Yes or no? Okay, so first part is over. Understanding question is first part. So do you agree with this? ये प्रेसिजन रेक्टिफायर इज बेटर, ये बेटर तो है कि नहीं बेटर? ये वर्स्ट है, प्रेसिजन रेक्टिफायर इज बैड, ऐसा कुछ है क्या? नो, प्रेसिजन रेक्टिफायर सीम्स टू बी बेटर बिकॉज इट वर्क्स फाइन इवन फॉर लो लेवल सिग्नल्स. ओके, अगर बेटर है तो हाफ वेव फुल वेव में जो डायोड्स यूज़ करते हैं ना वो रिप्लेस करेंगे प्रेसिजन रेक्टिफायर से.
तो क्यों पॉसिबल नहीं है? Okay, anyway, shall I go for answering this? Okay, so let me draw half wave rectifier. The purpose is not to draw circuits, the purpose is to understand the basic idea. Half wave rectifier, then we have a filter, half wave rectifier, filter, maybe regulator, and then you use a load. Okay, so the purpose of this power supply, this circuit is to create a power supply. And then provide power to the load. Okay, the same thing is true for full wave rectifier also. Full wave rectifier, bridge rectifier. So all these circuits are used for design power supply, design and implement power supply. Do we agree with this? Yes or no? Yes. Now if you think of precision rectifiers, suppose I have a precision rectifier, I have assembled it and it is working fine. Will it work without power supply? Yes or no? No, it will not work. So it will need plus minus power supply. ठीक है, तो ये पावर सप्लाई कहाँ से आएगा? सपोज दिस इज द पावर सप्लाई. ग्राउंड तो वैसे भी रहेगा. ओके, तो व्हाट दिस पावर सप्लाई विल कंटेन, अगर इसमें प्रेसिडेंट रेक्टिफायर हम लगाएंगे तो उसको पावर सप्लाई कहाँ से आएगा? उस पावर सप्लाई में अगर प्रेसिडेंट रेक्टिफायर लगाएंगे उसको पावर सप्लाई कहाँ से आएगा? डिड यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम नाउ? हाँ, सो प्रेसिडेंट रेक्टिफायर इटसेल्फ रिक्वायर्स पावर सप्लाई. तो पावर सप्लाई में फिर से प्रेसिडेंट रेक्टिफायर नहीं लगा सकते हम. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? दो तीन लोग बोल रहे कि समझ आया, बाकी लोग चुप है. एनीवे, सो यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. दिस इज वन थिंग, नंबर वन, ये प्रॉब्लम पहला वाला. दूसरा प्रॉब्लम ऐसा है कि 741 और एनी ऑप एम्प कैन सप्लाई और कैन कैरी लिमिटेड करंट, है ना. नॉर्मल डायोड्स जो होते हैं ना, वी कैन डिजाइन इट फॉर हायर करंट्स. इट मीन्स यू कैन rectify 1 ampere, 2 ampere, 10 amperes, but that is not easily possible with op amps. Op amps have limited current capacity. Of course, they can be designed to have higher current capacity, but then it becomes costly. If you are getting the diode of higher current capacity in say 5 rupees, you will get op amp in 100 rupees. So why to spend lot of money? So this is second. Of course, this cannot be done because this is a problem. Main problem is this. Like रेक्टिफायर के लिए पावर सप्लाई लगता है, उसके लिए फिर एक पावर रेक्टिफायर लगेगा, फिर पावर सप्लाई, फिर रेक्टिफायर. सो इट्स अ नॉट पॉसिबल लूप. अंडरस्टूड दिस आंसर? तो आपने क्वेश्चन भी समझा, उसका आंसर भी समझा है, right? So this type of questions are asked during interviews because they want to test whether you have fundamentally understood the situation or not. They are not interested in whether you know what is the current in this current resistor and so on, because they don't have enough time. So they just ask few questions by which the things can be easily understood, whether you have understood the things properly. Got this point? Okay, fantastic, very good. So I think we have covered the topic of precision rectifier. अगर कोई इसमें दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप
you can give the feedback, and then we'll accordingly take those questions and set right our understanding. ठीक है, right. So now we'll go to the topic of next topic, linear power supply. So shall we go for this topic? Present rectifier में कोई problem नहीं ना? Shall we go ahead? Okay, fine. Right. Now power supply is extremely important part of any electronic system. Important part or section in any electronic design. Many things are decided by power supply constraints. For example, if you think of a Mars rover, then you have to design your circuit based on availability of the power, not based on your expertise or your liking. Yes or no? Right. And one more thing, failure in the power supply makes the whole system fail. Therefore, power supply is an extremely important part. जो भी 80% of the failures of electronic systems are because of the failure of power supply. Okay, and because of this, many times people use additional power supplies, dummy power supplies. If you actually think of servers, everybody knows server, web server, ये server, वो server, बहुत सारे servers. So servers are actually, if you think of a rack server, so rack server is a big computer, and computer hardware is electronic circuit. So समझो कि ये rack server है. So this rack server will have the power supply modules which are hot swappable. It means in case one power supply goes off, second power supply immediately takes over, and the bad power supply can be removed on the fly, and new power supply can be inserted on the fly. सपोज ये गया, खराब हो गया, तो इसको रिमूव कर सकते हैं और फिर से यहाँ डाल सकते हैं. So such a redundancy and such a facility is made so that the servers run all the time. Are you getting the point? I gave this as an example only, but this is true for any design. So while designing any electronic system, you need to be extra careful about the power supply. Understood this to some extent at least? So first thing to understand, power supply is an important part of electronic design, and since it is very important, many of the interview questions can revolve under power supply, and if you are not able to explain simple things related with power supply, then the chances of selection are less, because they say that you don't know even power supply. What shall I ask you about this system? Therefore, you need to study power supply properly, especially fundamental parts of the power supply properly. Of course, the things are easier based on whatever we have learned, so nothing new or nothing illogical, everything is logical. Only thing that the logic we will understand slowly. ठीक है, डोज बाय डोज वो करेंगे. ठीक है. Now we will draw the steps or blocks involved in the power supply. Some of them are known. So usually the input is 230 volt, but sometimes the input can be anything. It can be solar panel, it can be a battery, it can be
chargeable cells, it can be any power source, but usually it is 230 volt. Then we will have a transformer, then we will have a rectifier, then we will have a filter, and then we will have a regulator. Right. And after regulator, what will be the next circuit? रेगुलेटर के बाद क्या रहेगा, क्या लगाना पड़ेगा रेगुलेटर के बाद? लोड. वेरी गुड. राइट. आउट ऑफ दिस व्हाट इज अंडरस्टूड और व्हाट इज मैंडेटरी? लेट अस टेक, ये तो चाहिए, ट्रांसफार्मर भी चाहिए, ट्रांसफार्मरलेस पावर सप्लाई हो सकता है, बट अभी ट्रांसफार्मर वाले को एज्यूम करते हैं. डायोड तो चाहिए बिकॉज वी हैव टू रेक्टिफाई द AC एंड देन get the DC. Why we have to have a DC power supply? Because most of the loads accept DC. बहुत सारे सर्किट्स ऐसे हैं कि जिनको DC सप्लाई लगता है, इसलिए हमको AC to DC करना पड़ता है, डायोड लगा. उसके बाद फिल्टर करना चाहिए बिकॉज देर इज़ अ रिपल, एंड देन वी हैव टू हैव अ regulator. Now we'll think of why do we need regulator. Out of this, ये वाला तो चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. Okay, so can we not directly do this bypassing the regulator? This is the first question, and if we understand the need of a regulator properly, then there is point in studying linear power supply. Otherwise वैसे भी हमारा काम चल रहा है इतने से, जो हमको पता है ना इतना, ये डायरेक्टली लोड को लगा दो. तो इसमें क्या क्या दिक्कतें आती है एंड वाई डू वी नीड रेगुलेटर? लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट सो एज टू गेट मोटिवेटेड टू लर्न दैट रेगुलेटेड पावर सप्लाई. ठीक है, करेंगे ये या डायरेक्टली सर्किट ड्रॉ करके एक्सप्लेनेशन करेंगे? बस आप बताइए कैसे करना है. I have two choices. One is regulator का पर्पस समझ के फिर रेगुलेटर स्टडी करना. सेकेंड ऑप्शन इज डायरेक्टली रेगुलेटर स्टडी करना, छोड़ देना पर्पस को. सो डू यू विश टू नो द पर्पस, वेरी पर्पस वाई रेगुलेटर्स आर रिक्वायर्ड? हाँ. सो लेट अस राइट डाउन द पर्पस ऑफ यूजिंग रेगुलेटर. We can consider this as a voltage regulator. Adding this voltage regulator to the power supply makes it as a regulated power supply. Fine. So let us understand the purpose of using a regulator. Fine. So let us start with the first purpose. To understand this purpose, let us take a small situation. जैसे कि I'll draw a circuit which is known to you. So I'll just draw it and you will tell me what is this. ठीक है, तो ये क्या है? What is this? कुछ तो सर्किट तो है, बट उसको बोलते क्या है नॉर्मली? जो भी आपको लगे अभी बता दीजिए बस. कॉमन एमिटर एम्पलीफायर. यस, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर. वेरी गुड. इट्स अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर. राइट.
Now, is there something called as operating point? इसमें ऑपरेटिंग पॉइंट जैसा कुछ होता है क्या? यस और नो? यस होता है, ठीक है। सो ऑपरेटिंग पॉइंट, उसको क्वाइसेंट पॉइंट भी बोलते हैं ना, और क्वाइसेंट करंट, एवरीबडी नोज क्वाइसेंट करंट। I don't want to go in this details, but something like you might have studied earlier, ऐसा कुछ तो आपने स्टडी किया होगा, और ये क्यू पॉइंट ऐसा बोलते हैं, क्वाइसेंट पॉइंट। यस और नो? अगर इसमें दिक्कत है तो आप लिख लेना कि मुझे समझ में नहीं आया, बाद में पूछना जब भी आप चाहें, ठीक है। राइट। आप एक क्वेश्चन आता है कि समझो ये वीसीसी ऊपर गया तो क्वाइसेंट पॉइंट बदलेगा कि नहीं बदलेगा? इंस्टेड ऑफ 6 वोल्ट इट बिकेम 7 वोल्ट, या 6 वोल्ट के बजाय वो बन गया 5.5, तो क्वाइसेंट पॉइंट ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा? मे बी स्मॉल, yes it will change, and changing quiescent point position will change the circuit characteristics, circuit behavior पे असर पड़ेगा। So how do we write that? If the power supply voltage changes, क्यों चेंज होगा? बिकॉज ऑफ सम रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल ये 230 वोल्ट है ना, ये बन गया 250 या 210 हो गया, तो आउटपुट भी कम ज़्यादा होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट वीसीसी विल गो अप एंड डाउन। अगर वो होता है तो इफ पावर सप्लाई वोल्टेज चेंजेस, द ऑपरेटिंग point of the circuit, or what we can call as in general for any circuit operating point, this is true for amplifier, but अगर कोई दूसरा सर्किट है और इलेक्ट्रिकल कंडीशंस so let us read this once again. If power supply voltage changes, the operating point of the circuit, operating point is applicable for this circuit, but for any circuit it can be called as electrical conditions, which can change circuit behavior. यानी कि उसका गेन चेंज हो सकता है, उसकी लीनियरिटी पे असर पड़ सकता है, एट्सेट्रा। राइट? Everybody agrees with this? If power supply changes, there is a chance that the circuit behavior may change. And if you don't want the circuit behavior to change, you can keep the supply voltage constant. अगर आप supply voltage constant किसी भी तरह से रखोगे, then the electrical conditions under which the circuit works will be same, and therefore the circuit behavior also will be the same. This is exactly what we want. ठीक है। समझो कि आपने एक टेलीविज़न ख़रीदा है और सुबह को वो अच्छा चलता है, दोपहर को थोड़ा इधर उधर होता है, सम चैनल्स लूज़ होते हैं, शाम को फिर से वो सही काम करता है। ऐसा टीवी आप लोगे क्या? है ना, वो टेलीविज़न वाला बोल रहा है कि नहीं नहीं सर, उसमें क्या खर्चा कम करने के लिए रेगुलेटर पावर सप्लाई हमने नहीं लगाया, तो इलेक्ट्रिकल कंडीशंस चेंज होगी तो बिहेवियर चेंज होता है, आप ऐसा ही यूज़ करो। तो nobody will use such kind of circuits. Everybody expects electronic circuits to work in the same way all the time. जैसे कि आपका मोबाइल है,
Everybody understands this? Therefore, to keep the circuit conditions, circuit behavior the same all the time, you need to provide constant power supply to the circuit. This is the first reason why power supply must be regulated power supply. ये समझ में आया आपको? Right. अभी कितना टाइम बचा है? 11 बज गए. अभी 5 मिनट कंटिन्यू करते हैं, फिर पॉज लेते हैं. ठीक है. दिस फर्स्ट रीज़न हमने समझा. सेकेंड रीज़न, instead of writing the title of this, I'll tell you a situation, and we'll ask some questions by which the things will automatically come out. ठीक है. Let me ask a question. आपको इन्वर्टर मालूम है? इन्वर्टर, लेट मी शो यू. ये क्या है? इन्वर्टर, ये सबको पता है. इसको हम यूजुअली क्या देते हैं कि लॉजिक लेवल. समझो कि मैंने एक स्क्वायर वेव दिया तो आउटपुट उल्टा आएगा. ये सबको पता है. ओके. तो क्वेश्चन तो अलग ही है. दिस इज नॉट अबाउट द ऑपरेशन. इसको पावर सप्लाई लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा. तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें जो करंट जाता है ना, तो यहाँ करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? ये सर नो. हेलो. इन्वर्टर सर्किट ऑपरेट होने के लिए कुछ करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको लगता क्या है? इंट्यूशन लगेगा. हाँ, ये ऑब्वियस ना, लगेगा. तो मुझे क्या करना है कि आई वॉन्ट टू ड्रॉ, आई रिपीट दिस. मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ग्राफ निकाल रहा हूँ और वेवफॉर्म निकाल रहा हूँ. क्या वेवफॉर्म है? एक्चुअली 3 वेवफॉर्म्स है. उसमें से 2 वेवफॉर्म तो मैंने वैसे भी निकाले हैं. थोड़ा सा एक्सपांड करके निकालता हूँ. दिस इज इनपुट. आउटपुट तो उल्टा होगा ही. दिस इज आउटपुट. और अभी मुझे क्या निकालना है कि सप्लाई करंट, सप्लाई वोल्टेज नहीं. सप्लाई वोल्टेज भी निकालता हूँ. सप्लाई वोल्टेज निकालना बहुत आसान है. ये बन गया सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट. ठीक है. अभी ये चाहिए. ठीक है. इतना समझ में आ गया? प्रॉब्लम क्या है, क्या करना है, इतना समझ में आ गया? कैसे करना है वी विल डिस्कस. सिचुएशन क्या है कि एक इन्वर्टर है, डिजिटल इन्वर्टर है. उसको पावर सप्लाई देने से ही काम करता है वो, है ना. तो पावर सप्लाई दिया तो वो करंट ले लेगा. करंट ले लेगा और इनपुट दिया तो आउटपुट भी दे देगा. इनपुट दिया आउटपुट दे देगा. पावर सप्लाई भी हमको पता है, लेकिन हमको उसका सप्लाई करंट के बारे में सोचना है. क्यों सोचना है ये मत सोचो अभी. मैं बोल रहा हूँ कि सोचना है बस. दैट्स ऑल. ठीक है. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल ड्रॉ इसका एक्सटेंडेड, यानी कि अंदर वाला सर्किट मैं अभी निकालता हूँ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का. या आप समझो कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर नहीं है, इन्वर्टर नहीं है, ये नैंड गेट है. कुछ भी समझो, क्या फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन पावर सप्लाई. तो नैंड सर्किट का, अगर नैंड गेट का कुछ हम इंटरनल सर्किट निकाले तो ऐसा रहता है. आई एम नॉट ड्राइंग कंप्लीट सर्किट बिकॉज दैट इज नॉट द पर्पज. ये इनपुट्स रहेंगे, मल्टीपल इनपुट्स, और उसके बाद देर विल बी 2 ट्रांजिस्टर्स एट द आउटपुट.
ऐसे 2 ट्रांजिस्टर्स रहेंगे। और ये यहाँ से आउटपुट आएगा। फॉर कन्वीनियंस विल जस्ट रिमूव दिस डायोड। ठीक है, लेट अस मेक द थिंग्स सिंपल। और ये रजिस्टर भी हटा देते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है। सो दिस इज टू एनहांस द करंट कैपेसिटी ऑफ द NAND गेट। ये जो NAND गेट है ना, वो करंट देना चाहिए प्रॉपरली। इट मीन्स इट शुड बी एबल टू ड्राइव द लोड, जैसे कि LED लगाना है या बाकी कुछ लगाना है। सो फॉर दैट द ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड। एंड व्हेन द आउटपुट इज हाई, सपोज इसको Q1 बोलते हैं, इसको Q2 बोलते हैं, हाई आउटपुट है, तो व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ Q1, Q2? हाई आउटपुट है तो Q1 का स्टेट क्या होगा, Q2 का स्टेट क्या होगा? I think the time is up. So we'll continue this discussion next time. Shall we do this? Because the time is almost up. So let us take a pause, and next time we will continue. That will be easier because you need to get some time in between. Okay? Okay, fine.